કેમ છો પબ્લિક? I am Chintu. You are most welcome to my YouTube channel Coding with Chintu. In this video, I will show you the basic structure of C programming. So let's dive into the ocean of programming, and you can find all these codes and notes about C programming on Instagram @CW Chintu. So let's go to the PPT. Here you can see that this is the basic structure of C programming. So सबसे पहले आता है documentation section. In that section you can write author name, program name, date and many other details. मतलब कि आपको ये सभी डिटेल्स कमेंट लाइन के बीच में लिखने की होती है, जो कि रन टाइम को आपको देखने को नहीं मिलेंगी. After that there is one link section. In that section you have to link the header files of C libraries to your program. So you can simply use the functions like printf, scanf and many other functions which are already defined in header file. उसके बाद है definition section. In that section you can define all symbolic constant कि जो आप अपने प्रोग्राम में आगे यूज़ करने वाले हो, तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो. जैसे कि पाई इज़ इक्वल टू 3.14. अगर आप कोई मैथ का फंक्शन बना रहे हो तो यहाँ पे आप पाई को डिफ़ाइन कर सकते हो. अगर आप कोई फिज़िक्स का फंक्शन बना रहे हो तो g इज़ इक्वल टू 9.8 वो भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो. उसके बाद एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. इन दैट सेक्शन you can declare global variable. ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जो आप मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो एंड कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो. So let's go to the Turbo C screen. I have already written one code. The first is documentation section. In that section I have written my name and date here. After that there is the link part. In that I have included two header files, studio.h and conio.h. Hash it means pre-processor and .h means header files. You can learn about these header files in my next coming video. Here is definition part. In that I have defined pi is equal to 3.14 and g is equal to 9.8. After that there is one global declaration part. I have declared one global variable answer. And here is my user defined function कि जो मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन में डिफाइन किया है, सम. उसके बाद है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन कैन डिवाइड इन टू पार्ट, डिक्लेरेटिव एंड एग्जीक्यूटेबल. डिक्लेरेटिव पार्ट में हम डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट में वी कैन यूज ऑपरेटर्स एंड many other statements like printf, scanf. After that there is a return 0 and उसके बाद curly bracket. So let's compile. You can see that here is one error. So let's check that. Main cannot return a value. यहाँ पे हमने void लिखा है. void मतलब null. तो अगर वो null है तो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता.
तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 को निकाल देता हूँ एंड आई एम सिंपली राइट गेट सी एच के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा एंड यू कैन सी दैट देर आर 0 एरर्स एंड रन दिस इज माई आउटपुट स्क्रीन. So thank you for the watching video. We will meet soon in my next video. Take care. Bye bye.